Asam, Iman, Basma, Chima, Roshin, Dure, Durbasha, Reja, and Abia. So we counted कि हमारे पास GC वाले लोग ज्यादा हैं, तो पहले वो पेपर थे, ठीक है? Can you help me how to match these? Yes, बच्चों, platelets, Clotting. clotting, yeah, plasma, Fibrinogen. fibrinogen. You know, fibrinogen is a soluble protein, no? Dissolves in the plasma. And phagocytes, It engulfs pathogen nice. And lymphocytes, nothing to do. or make antibodies. So full marks so far, well done. जहाँ पे कट गया ना वहां पे मैं कर दूं. How red blood cell is specialized? रेड ब्लड सेल में ये होता है कि नो, यूं कर लूं मैं, नो न्यूक्लियस है ना. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम, नो न्यूक्लियस. वाई बेटा? मोर स्पेस फॉर, भेजा, मोर स्पेस फॉर हिमोग्लोबिन. प्लीज डोंट रिमेंबर, डोंट फॉरगेट इट कि ये जो है ना वो है एक्सप्लेन है. और बच्चों और बताओ. कंटेंस वेरी गुड. RBCs contain HP. Amir Adar, to transport dash. ऑक्सीजन. और तीसरा पॉइंट कौन बताएगा मुझे? इट्स बाय concave to have more स्पेस फॉर हेमोग्लोबिन. surface area. और बच्चों ये Large. फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है? फ्लेक्सिबल कोई बात नहीं है, मैं आपको शेयर कर दूंगा सॉल्व. अच्छा बात सुनो बच्चों, ये फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबल मतलब इट कैन स्क्वीज. इसका एडवांटेज क्या होता है फ्लेक्सिबल? So it can squeeze. Can go from narrow veins, can pass through narrow veins. No, not veins. Vein तो बहुत बड़ी होती है. Squeeze through. No, Capillaries, sorry. क्या करेगा? Capillary. प्रभाषा जबरदस्त. ठीक है बच्चों, capillaries. अब आप मुझे ये बताएं, रिजा कुछ बोल ही नहीं. Suggest 2 factors lead to change in RBC count 25 years old female. देखो ये जो है ना इतने हो गए उसको, ठीक है? 1 millimeter ml blood count, normal red cells. अच्छा वो कम हो गया उसके, है ना? तो एक तो हो सकता है menstrual loss. Or giving a birth. Menstruation, dietary है ना? She may get anemic. Diet deficiency. Can we confirm this? Yeah. So they say iron deficiency, anemia, menstruation is 1. और हमने क्या किया था? Anemia 2, pregnancy, accidental loss, and altitude. Okay, we are back. Probably we did this question earlier. Labeling part B. Will anybody label B? MashaAllah. यार ये पहले assignment में भी किया था. Fruit. And बच्चों, what is C and D? What's happening in C and D? Between C and D. Germination. Wow. Germination. Nice. Achha, this question says, suggest where are nectaries located and how they help in pollination. Rija, क्यों नहीं बोली बेटा? Nectaries कहाँ होती हैं? Nectaries are at the base of that. Flower. No, not flower, man. Petals. Petals, yeah. देखो ये petals हैं. तो यहाँ पे nectaries. इनके लिए flies आती हैं, ठीक है? जब वो आती हैं तो वो they get rubbed with what? Anther. Anther. बच्चों समझ आ रही है ना? तो where are nectaries, Rija Pasha? तुम लोगों ने at the base of petals. And how this helps in pollination? Insects rub against that. Very Anther. Anther. When they go down to pick dash. Rija. Nectar. Nectars. Good. So cause pollination. So the question is, describe what happens
Formation of D and leading to formation of D and its content. B is fruit. देखो pollen जैसे grows down the style. ये बहुत easy है. ये वो आपको germination of pollen grain बता रहे हैं. तो pollen grain falls here, then you know pollen tube is made. Yes or no? बच्चों pollen tube हम क्या कहेंगे? Pollen tube grows down what? Down the dash. S6. The style? Grows down the style towards dash. The Ovary. ovule. और जो pollen का nucleus है ना, that combines with dash nucleus. Pollen nucleus fuses with Ovum, nucleus, and ovaries of ovule flower. Yeah, ovule nucleus. ठीक है ना? So ovule becomes dash. Seed. And ovary becomes anybody? Fruit. Marshall. Done? Easy है ना? या बच्चों मुझे बताओ why suggest why caffeine is useful to plants. Coffee, this plant produces a chemical called caffeine. High concentration is toxic. So production of caffeine is useful to plants. Sorry? Okay, it could be, it suggests karna, okay. So it can keep away the pests. Nice, good one. Pesticide. So why it's important for plant to have different concentration in different parts? Because some parts will be attacked by insects more, है ना? जैसे वो petals में ज़्यादा वो बनाएगा. हाँ देखें, some areas insects are more likely to attack, so pollinators not killed. Oh, so that's very important. कि why different concentrations? Because high concentrations are toxic, ठीक है? So why they make different concentrations? Because different areas are attacked differently. Some areas are more likely वो insects की approach में होंगे ना, so they make more over there, ठीक है? But not everywhere because useful pollinators are not killed. Caffeine and adrenaline, you know, वो कह रहे हैं using caffeine and adrenaline as example. Explain difference between drug and hormone. You know, drug external चीज होती है और हार्मोन हमारी बॉडी के अपनी है, ठीक है? तो बच्चों ड्रग क्या हुआ? Yeah, it's externally administered, है ना? And hormone is made it's internal. Or secondly, this is not by gland, but this is secreted by. ये आप कह सकते हो बच्चों. टू इफेक्ट्स कैफीन. आप मुझे बताओ ड्रिंकिंग कॉफी का क्या इफेक्ट होगा? इजी. कॉफी पी के आप एक्टिव हो जाते हैं, जस्ट लाइक एड्रेनलिन, है ना? तो पीपल that Dilates, heart beat rate goes increases. up. Yeah, and even breathing rate that Increase. just Increases. like adrenaline. Cup of coffee does the same thing. अच्छा ये क्या परसेंटेज चेंज? तो जो परसेंटेज चेंज होती है ना, वो होती है फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल. अच्छा परसेंटेज ऑफ टोटल 3. ओके 3 मोस्ट कॉमन. तो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स आर CHO, है ना? यस यू राइट. तो आप इन तीनों को ऐड कर लोगे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के. बच्चों कार्बन कितने परसेंट है? यस 18.5% ये हो गया. हाइड्रोजन इज 9.5 ऑलमोस्ट and this guy is 65. So you just need to add them up, है ना? कितना बेटा? ओके तो वर्किंग भी बतानी है. सारे हमें ऐड करने हैं, ठीक है? 9.5 plus 65 plus 18.5 so 93%. नाइस. अब हम देखते हैं नेम 2 types of substances that contains carbon, hydrogen, oxygen. Very popular. Carbohydrates and
Fats. Fats. Yes. You know, proteins have nitrogen as well. Amir, either Yes, sir. participation कम लग रही है आपने. Sir, I'm not feeling well today. That's why. Oh, so discuss why water makes up such a high percentage of adults body mass. क्योंकि water के बहुत रोल हैं, you know. ये आपको डिस्कस करना है. डिस्कस का मतलब क्या होता है बेटा? आप देखो, वाटर इज सॉल्वेंट, देन फॉर व्हाट? सॉल्वेंट फॉर न्यूट्रिएंट्स. हेलो, और किस लिए होता है बेटा? अगेन, या न्यूट्रिएंट्स, इट्स फॉर excreta, the excretable things, for hormones, etc. Again, water is solvent ना, it nutrients भी इसमें dissolve हो जाते हैं. Excretable thing, यूरिया वगैरह है ना, and then hormones वगैरह, they are transported by water. One thing. Then water helps lose body dash. Body dash. It's Heat. heat. Yeah. By what? By sweating. Sweating. Very good. And number 3, activates dash. E6. Enzymes. You know, enzymes can't work without water. Activates enzyme because enzymes are, इसको कहते हैं hydrolases. Hydrolases means they work with enzyme, with water presence. Explain why a cell from tissue will burst if it's placed in pure water. बहुत easy question है. चीमा साहब. Due to osmosis. Yeah, wow, जबरदस्त. Water has that. ये explain है बच्चों. Water has dash water potential. High water potential. Very good. Okay. Then water will wow, Move into the cell. end, है ना? इसको end osmosis भी कहते हैं. And then no cell wall. Yes. So cell will burst. पता है आरबीसी हमारे सेल्स नहीं बर्स्ट करते नॉर्मली बॉडी में, बिकॉज होम्योस्टैसिस मेक्स श्योर कि बाहर वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा ना हो. बच्चों समझ आ रही बात? जैसे ही Yes, आरबीसी sir. जब बॉडी से बाहर निकालेंगे ना, यू पुट देम इन वाटर, दे विल बर्स्ट. पूरा वाटर रेड हो जाएगा. Suggest one tissue that contains relatively high percentage mass of nitrogen and explain your answer. Human tissue Yes, sir. contains different percentage mass of different. Nitrogen, very good, mashallah. Nitrogen ज्यादा किसमें होगी बेटा? Muscles, yeah. One Sir, tissue. protein. Muscle, nice. Muscles because they are proteinic. They are made up of protein, and proteins are made by amino acids, which contain dash. Nitrogen. Nitrogen, yeah, good one. Next question 4 is suggest how closing the eyelid. Suggest how closure of the eyelid sneeze is coordinated. Coordination कहते हैं ब्रेन का और हमारी बॉडी का आपस में पूरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का कनेक्शन. तो कोई मुझे बताएगा कि sneezing, closure of eyelid is coordinated. एक thing please. A sneeze is triggered by dust irritating receptors. Okay. तो देखो डस्ट ने इरिटेट किया रिसेप्टर्स को, तो इम्पल्स क्या होगा? इम्पल्स इज सेंट टू डैश CNS. ब्रेन, है ना? ठीक है. ब्रेन सेंड्स डैश इम्पल्स. Motor impulse. यहाँ पे हम ये भी ये भी करें बाय सेंसरी न्यूरॉन, ये भी मार्किंग पॉइंट होगा. मोटर इम्पल्सेस टू muscles and dash iris, lens, eyelids. Eyelid. Eyelid. Wow. Muscles dash, so Contract. Constrict. Yeah, contract. Constrict. So eyelids dash, close. Close. Muscles contact. So Rija, मुझे बताएं, impulses is sent to what? Brain by motor. Brain sends dash impulse.
motor impulse है ना, to muscles and eyelids by what? Motor neuron. यहाँ आप रिले न्यूरॉन भी कह सकते हैं, सेंसरी से रिले, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो eyelids close. अच्छा, this why suggest how this causes disease transmission, because some diseases are dash-borne. Yes, because some diseases are airborne. B-O-R-L-E. So pathogen can go out with sneezing, है ना? और आगे क्या होगा बेटा? And inhaled by another person. अगर आप बोलते दूसरा बंदा अगर इनहेल नहीं करेगा फिर ट्रांसमिशन नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी हमें बता रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ट्रांसमिशन कंप्लीट्स व्हेन इट गोस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बच्चों भूलना नहीं है। तो मुझे बताओ ये गिव द नेम ऑफ टाइप ऑफ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। अच्छा जी, हाँ, फोटिक। फोटिक स्नीजिंग पता क्या होता है? जब आपको कोई लाइट लगाता है ना आंखों में तो हम स्नीज करते हैं। 18 to 35% are doing this. अच्छा बेटा, इसकी जेनेटिक बेस फॉर दिस इज नॉट फुली अंडरस्टूड, बट डोमिनेंटली इसका मतलब ये क्या होगा? कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस? लवली, माशाल्लाह यार। दुरेज कह रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूस रिलेशन बिकॉज ही नोज इट्स कंट्रोल्ड बाय डैश जीन्स या एनवायरनमेंट। बच्चों आपको मेरी बात समझ आ रही है कि जब आपकी आंखों में लाइट लगे तो आप आइज को बंद कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि 18 to 35% पीपल हैव दिस थिंग एंड देन ही सेज कि इसकी जेनेटिक बेस नहीं है, बट इट इज सेड दैट ये डोमिनेंट एलील से कंट्रोल होता है। मतलब जेनेटिक बेस इज नॉट फुली अंडरस्टूड। तो जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो मुझे बताएंगे कि इसको आपको याद है कॉन्टिन्यूस वेरिएशन होती है व्हिच इज बिकॉज ऑफ जीन्स एंड एनवायरनमेंट। Environment, yeah. रिस्पॉन्स करें आप, माशाल्लाह, वेरी नाइस टू सी। तो बच्चों ये मुझे बताएं ये क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा डिसकॉन्टिन्यूस होगा? ऑनलाइन फ्रेंड्स, ईमान, बासमा, रशीद, अमीर हैदर, चीमा, why is it discontinuous? चलो मैं बोलता हूँ, आप मुझे कंप्लीट करें। Discontinuous because it's controlled by only dash only genes, रुबाइशा, genes and environment, जैसे स्किन कलर है, बॉडी मास है, हाइट है, इंटेलिजेंस है। और क्या होगा बच्चों, और बताएं? because there is dash range of phenotypes. रिचा, लिमिटेड या वाइड? Limited. इधर लाइट लगने से या तो आपको करेंगे आइज क्लोज करेंगे या नहीं करेंगे। लिमिटेड रेंज ऑफ फिनोटाइप। और क्या फीचर्स होते थे डिसकॉन्टिन्यूस के? इंटरमीडिएट फॉर्म होंगी नहीं होंगी? नो इंटरमीडिएट फॉर्म, भूल गए आप। अच्छा बच्चों, डोमिनेंट एलील क्या होगा? एन अ डैश पर्सन एलील व्हिच शोज इटसेल्फ। अमीर हैदर, ईमान, एन अ In a डैश heterozygous people. अभी ने बताया भी है, शोज इटसेल्फ। In a heterozygous, it's represented by dash letter. Reja. Capital letter, sir. मैंने बोला है heterozygous, आपने सुना नहीं? No, we can't really. And a heterozygous person. And it's represented by a big letter. Yeah. Definition of this different from the definition of darkness in an allele separately. Wrong हो गया? Dominant is always expressed alternative form of gene, allele. Oh, sorry, allele भी है. Yes. Dominant heterozygous person, the allele that shows itself is called this. और फिर allele का वर्ड भी बताना है। allele is a version of gene कह लो, ठीक है? ये भी इजी है। Thank you. This version of gene या alternative form of gene, सही? वो कह रही है कि you need to say something about dominant. The other thing is allele as well. Oh, very fun question. Anyone? मैं चाह रहा हूँ ऑनलाइन बच्चों बताएं। Molar.
नो, एक सेकंड, And scissors. ये तो आईसीएसई में तो है, ये देखना पड़ेगा मुझे। चलो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। अच्छा ये इंसाइजेस नहीं है बेटा, ऊपर से देखें कितना जो है ना ये बना हुआ है रफ सा, प्री मोलर या मोलर, Molars. तेजा पाशा, प्री मोलर एंड मोलर। तो आप मुझे बताओ इसका सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है? Enamel. एनामल, नाइस। उससे नीचे डेंटाइन है ना। एक्सप्लेन हाउ टूथ एंड सलाइवरी ग्लैंड कंट्रीब्यूट टू डाइजेशन। Salivary glands secrete salivary amylase which help in digestion of maltose and crush वेट teeth help in chewing. या तो ये तो हम बता रहे हैं, टूथ ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग से क्या करता है? इंक्रीजेस दी Surface area for digestion. surface area of food for dash to work on it. Enzymes. Wow, wow. And salivary gland secretes what? Salivary Amylase. that breaks down Maltose. starch to malt. Oh, starch to maltose. Yeah. अच्छा बच्चों, to name two substances and explain how they are involved in digestion. Stomach, तो वो कह रहे हैं जी stomach makes HCl, है ना। ये क्या करता है बेटा? Activates dash pepsin, ठीक है। आप ये नहीं कह रहे तो आपको provides dash pH for pepsin, Optimum pH for pepsin. optimum pH to pepsin। एंड दूसरी चीज क्या बनाता है वो? पेप्सिन, which carries out hydrolysis, है ना, hydrolyzes dash। Anybody? Protein. Protein, yeah, Or proteins to polypeptide। बच्चों बहुत जल्दी तो नहीं हो रही, समझ आ रही है बेटा? समझ आ रही है रुबाशा? अबिया, you people can stop me। How gastrin reaches the stomach? Gastrin जो है ना वो stomach का जूस होता है ना, तो इसको obviously blood vessels will carry this up। There are gastric glands which make this। ये क्वेश्चन हमने पहले किया है। जरा I would like to engage online students। रोशीन, बासमा, हैदर अब्बासी, तीन है। बासमा आप बताइए what is this molecule? चलो anybody, anyone? DNA. sir DNA. DNA, very good। Oh, they say name। यार एक सेकंड, या इट्स एक्सेप्टेड। डिस्क्राइब थ्री फीचर्स। एक तो ये होता है कि डबल They स्ट्रैंडेड, are double stranded. डबल Yeah. स्ट्रैंडेड, नाइस। बोथ स्ट्रैंड्स आर हेलिकल, सो डबल हेलिक्स। भैया कुछ आ गया आप। और यू नो बोथ स्ट्रैंड्स मेड बाय डैश, ना प्रोटीन नहीं, बोथ स्ट्रैंड्स आर मेड अप ऑफ डैश। रेजा बी से Bases. bases, which bases? A, G, and G. A, T, G, C। नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वो कह रहा है एनिमल एंड बैक्टीरिया, ठीक है, एनिमल एंड बैक्टीरिया। इसमें आपने लोकेशन भी बतानी है और शेप भी बतानी है उनके डीएनए की। तो एनिमल्स में डीएनए कहाँ होता है बेटा? Sir, in the middle of cell. न्यूक्लियस, मिडल ऑफ सेल नहीं। और दूसरा लीनियर है, सर्कुलर? Sir, circular. लीनियर शेप। अमीर अदर Sir, ओ लोकेशन, एनिमल्स में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होगा, और बैक्टीरिया में रजा बताएंगे। रजा, डू बैक्टीरिया हैव न्यूक्लियस? दे डोंट हैव न्यूक्लियस, सो साइटोप्लाज्म। और आगे रोशीन बताएंगे हमें। बैक्टीरिया शेप बताइए बेटा, एनिमल्स में डीएनए की शेप क्या होगी? Linear and then bacteria के circular. सर्कुलर। ग्रेट बेटा, आज you know you made just no mistake, just one minor mistake पूरे पेपर में, and that's so good a sign। और अबिया तो जबरदस्त। एक्सप्लेन हाउ दिस मॉलिक्यूल कंट्रोल सेल। अच्छा, डीएनए कैसे कंट्रोल करता है? यू नो डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ, याद है? मेक्स नहीं, सॉरी,
DNA contains dash. G से Genes, या 20 genes. और then copy of genes. Copy of genes called dash. mRNA. Yes, mRNA is made, which guides the senses of dash. Protein. Protein. अमीर हैदर bomb. And you know, रिजा बताएंगे मुझे रिजा बेटा sequence of dash and protein. रुको ये रिजा बताएंगे is determined by sequence of dash and mRNA. G. Anyone now? No. Sequence of amino acids in protein are determined by the sequence of bases in mRNA. oops, कितने क्वेश्चन है यार? Yes. ये बताओ बच्चों, name the structure. रेजा भाषा क्यों नहीं बोली मुझे आप? Name the structure within Sir, aerobic respiration. बहुत easy है. Mitochondria. Oh, mitochondria. इसका तो आप इशारा भी नहीं कर सकते, लगता लगेगा गाली दो, है ना? अच्छा, बैलेंस इक्वेशन क्या होगा? दिस वुड बी C6H12O6 प्लस how many O2? 6 O2. 6 CO2 and 6 water. Nice. Confirm Jannati. ये बताओ बच्चों, state whether the condition may lead to root hair cell respiring anaerobically and explain your answer. अच्छा, कब जो है ना रूट हेयर सेल्स एनारोबिक करेंगे? एनारोबिक कब करेंगे? जब वो होंगे हैवी रेन्स. Yes. पता है क्यों? वो जो Because less light will reach ना due to रैन clouds. क्या करती है? रैन मेक्स वाटर लॉगिंग. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंफॉर्मेशन है नहीं. वाटर लॉगिंग एंड द सॉइल मेक्स लेस डैश go down, less oxygen go down to roots. That's why they carry out anaerobic respiration. बच्चों समझ आ रही बात? Yes, sir. Question 8. Suggest factors that cause change in the two population and how they may be linked. Human, ये बहुत easy है. देखो 1970 में human population थी इतनी और अब इतनी ज्यादा हो गई और टाइगर कम हो. Sir, reproduction and hunting. तो for human better medicine है ना? Yep. Less predation. Facility, healthcare, yeah. और क्या होगा बेटा? मशीनरी, एग्रीकल्चर मशीनरी, मोर क्रॉप्स, है ना? सॉरी, मशीनरी, ओके, वो भी उसी में आ गया. पेस्टिसाइड्स, herbicides, etc. और टाइगर की पॉपुलेशन क्यों ड्रॉप हुई है? हंटिंग, हैबिटेट डैश, Destruction. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. एंड पी से भी एक वर्ड, Predation. इसको पोचिंग भी कहते हैं वैसे. हंटिंग नहीं, डिफॉरेस्टेशन भी होती है. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन वही स्लैश किया. बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन एंड सजेस्ट वेज ऑफ डूइंग इट. अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट तो इसलिए कि जाहिर है टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी. या वैरायटी, फॉर सीनिक ब्यूटी भी आप कह सकते हैं. आप ये कह सकते हैं टू फॉर स्टेबल, नहीं टाइगर क्या फूड करेगा? फॉर स्टेबल इकोसिस्टम, बिकॉज यू नेवर नो
फूड चेन या इकोसिस्टम, फूड चेन, नाइस। और हाउ का क्या होगा बच्चा, बच्चों हाउ क्या होगा, हाउ टू So by कंजर्व, protecting their habitats, सॉरी, कैप्टिव ब्रीडिंग, protecting their habitats. कैप्टिव ब्रीडिंग, बैन ऑन हंटिंग, यस। और क्या हो सकता है बेटा, प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरिया समझ तो जैसे सफारी वगैरह होती है, कंजर्व एरियाज, हैवी फाइंस। So that's marks end of this chapter, this paper. अच्छा, अब आप मुझे जल्दी से रिजॉइन कर सकते हैं, बिकॉज इसकी तो वीडियो मैं शेयर करूंगा और उसके साथ हम दूसरा पेपर स्टार्ट करेंगे। वी स्टिल हैव सम टाइम, इफ यू कैन जॉइन मी क्विकली प्लीज फॉर IGCSE।